हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। उससे पहले हम थोड़ा अपने नंबर सिस्टम पे नज़र डालते हैं। कब से नंबर सिस्टम शुरू हुआ? सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू डेवलप नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड। देन बेबीलोनियंस गॉट इट फ्रॉम देम अराउंड से 4000 to 5000 years ago. This Sumer और बेबीलोनिया इज़ नाउ सदर्न इराक। देखो, हम छोटे से बड़े होते तक नंबर्स यूज़ करते आ रहे हैं विदाउट इवन नोइंग कि हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, टॉडलर से 2 या 2.5 साल का, उसके पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं। मैं उससे पूछूँ, बच्चे कितने टॉफ़ीज़ हैं आपके पास? वो अपनी मुट्ठी खोलेगा एंड ही विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 आई हैव 4 टॉफ़ीज़ बोला। ऐसे ही मैं स्कूल के बच्चे को पूछूँ, बच्चे कितनी कलर पेंसिल्स हैं आपके पास? वो अपना बॉक्स खोलेगा एंड ही विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4। ही सेज आई हैव 10 पेंसिल्स। तो ये तो छोटे छोटे नंबर्स थे। आज की तारीख में हम इतने बड़े बड़े नंबर्स काउंट कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किसकी देन है? दिस इज़ ऑल द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हमारे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, ये जो इन्वेंशंस करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ इतनी स्मूथ और इजी हो गई है और होती जा रही है। तो ये नंबर्स, हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कहाँ कहाँ हम नंबर्स यूज़ करते हैं? देखो, जैसे मैंने लिखा है क्लास 8 आई एम यूजिंग नंबर, चैप्टर 1 आई एम यूजिंग नंबर। इफ़ आई राइट द डेट हियर आई विल यूज़ नंबर्स। स्कूल में, वर्क प्लेस पर, एवरीवेयर वी आर यूजिंग नंबर। मैं बैंक गई, वहाँ मुझे पैसे का लेन देन करना है, कुछ पैसे निकालने हैं, कुछ डालने हैं, तो आई विल काउंट दैट मनी। फ़ोन नंबर्स, ऑल आर नंबर्स। फ़ोन पे लॉक करना मुझे, दैट इज़ ऑल्सो ए नंबर। डॉक्टर्स यूज़ करते हैं नंबर्स, जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं ऑल आर इन नंबर्स। सो द नंबर्स विच कम नेचुरली टू अस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 and so on, there is no limit, infinite. How we get the other number? By adding 1 to the previous number. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4 and so on. These are called counting numbers or natural numbers and are denoted by n. And if I add 0 to this set, what I get is whole numbers and are denoted by w. ज़ीरो कहाँ इन्वेंट हुआ? इन इंडिया एज ए नंबर, एज ए डिजिट। दिस क्रेडिट गोज़ टू इंडिया। दिस इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो वॉज द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन इंडियन मैथमेटिक्स। Previously, 0 was used as a placeholder, like suppose one number is 9, other is 90 and 900. So 9 is, this is only units digit, this is unit and tens. Previously, when there is no number in units place, in the absence of that number, 0 was used. So like this is ones, tens and hundred. There were no numbers in ones place, units place and tens place, so 0 was put in the absence of those numbers and to differentiate between these numbers. अगर हम equations में देखें, जैसे कि suppose I write x plus 3 is equal to 10. What is the solution of this equation? Means for which value of x this equation is satisfied? This is satisfied for 7. That means x is equal to 7 is a solution of this equation and 7 is a natural number. Suppose I write x plus 3 equal to 3. So what is the solution? If I put x equal to 0, then this is satisfied. But is 0 a natural number? No. So this equation does not have any solution in natural numbers. This is a solution in whole numbers. Can I say every natural number is a whole number? Yes, because this is a part of this. Is every whole number a natural number? No, because 0 is not a natural number. Which is the smallest whole number? Of course, this is 0. Now, if I add minus
1, -2, -3 and so on. There is no limit, like up to infinity. This also up to infinity. What I get is integers and denoted by I. अब integers की ज़रूरत कैसे पड़ी? Suppose मैंने कुछ खरीदा और वो था 150 रुपीज़ एंड आई हैड ओनली 100 रुपीज़, तो मैंने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दी और उसने अपने खाते में लिख लिया कि 50 रुपीज़ ड्यू। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जब उसने अपना खाता खोला तो उसने देखा 50 रुपीज़ ड्यू लिखा है, तो उसको ये नहीं समझ में आई वेदर it is to be taken from the customer or it is to be given to the customer. So to make it easy, if he writes as say -50 for the amount which is to be taken from the customer and +50 if he has to give to the customer, it becomes easy. अगर हम equations के form में देखें, if I write x plus 13 equal to 5, then which value of x satisfy this equation? Of course, this is a -8 plus 13 is 5. That means x minus 8 is satisfied for this equation. Is -8 a natural number? No. Is -8 a whole number? No. So to include these type of numbers, we get integers. Okay? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक कुआं है जो विलेजेस में होता है। सपोज उसका वाटर लेवल यहाँ तक है, ठीक है। अब क्या होता है, रेनी सीजन में और पानी आता है तो लेवल बढ़ जाता है, और समर में वो पानी नीचे हो जाता है कि वेपर बन के उड़ जाता है। तो इफ़ आई डिनोट दिस एज 0 और जो नीचे वाले नंबर्स हैं डिनोट -1 -2 और ऊपर +1 +2, एंड इफ़ आई से द लेवल हैज़ गॉन डाउन बाय -2 means it has vaporized, and if its level is +2 means it has risen up. Now if I say what is the solution of this equation, if I put x as 2/3, 3 will be cancelled out, 2 is equal to 2. So 2/3, value of x as 2/3 satisfies this equation. That means this is a solution of this equation. So 2/3, is it a natural number? No. Is it a whole number? No. Is it an integer? No. So include such numbers, rational numbers were created. और एक एग्जाम्पल लेते हैं रैशनल नंबर के लिए। सपोज जैसे एक वेल का ही हमने एग्जाम्पल लिया था। सपोज आई से that water level is gone down by 50 centimeter. So I will write this as -50. But if I write 50 centimeter as half meter, you know how it came? See, 1 meter is equal to 100 centimeter. That is 100 centimeter equal to 1 meter. So 1 centimeter is 1/100 meter. So 50 centimeter is 1/100 into 50 meter. So 50 ones are 2. So this is half meter. Now half meter gone down means -half meter. This is neither a natural number nor a whole number nor an integer. So this type of numbers are rational numbers. इससे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होती हैं? दिस इज ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर न्यूमरेटर कैन बी 0 और पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दीज आर फ्रैक्शंस। और हमने फ्रैक्शंस में पढ़ रखा है चारों ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स ऑन फ्रैक्शन। ओके, सो फ्रैक्शन जो हमने पढ़ रखा है, फ्रैक्शन is always positive or 0 because both are positive. Fraction is a part of the whole. There is one whole and fraction is a part. If I cut it into 2 equal halves, then one part is a fraction of this and that is half of it. If I further fold it and make 4 parts, then this one part is 1/4. These are all
fractions which is always less than 1 because it is a part of the whole is 1. Okay, next we come to rational numbers. rational numbers देखो किस वर्ड से बना, रेशियो से. रेशियो क्या होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं. देखो जैसे कि मैं कहूँ मेरी हाइट है 5'3" और मेरी फ्रेंड की हाइट है 5'5", तो मेरी फ्रेंड मुझसे 2 इंच लंबी है. दिस इज़ कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन. एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कॉस्ट ऑफ द बाइक इज़ ₹70,000 एंड दैट ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ ₹10,000. तो कितना डिफरेंस हुआ, 60,000. आई कैन से कि बाइक की कॉस्ट साइकिल से 60,000 रुपीज़ ज़्यादा है. और अगर मैं कहूँ कि हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ बाइक इज़ दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल, देन क्लियरली इट इज़ 7 टाइम्स. कैसे आया, 70,000 को डिवाइड किया हमने 10,000 से. इसको रिड्यूस करें लोएस्ट फॉर्म में तो दिस इज़ 7/1, 10,000 से डिवाइड कर दिया. तो इस तरह के जो कंपैरिजन है जिसमें आता है हाउ मेनी टाइम्स, दीज आर कंपैरिजन by division. These type of comparisons are called ratios. That is, ratio is comparison by division. In this case, where the difference is more, comparison by division looks more appropriate. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक क्लास में 20 बॉयज़ हैं एंड 40 गर्ल्स हैं. मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो गर्ल्स हैं 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 20 + 40 दैट इज़ 60. इसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं तो 20 से डिवाइड करके आई गेट दिस इज 2/3. दैट मीन्स रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज in a class is 2/3. It is in the ratio of 2:3. This is the sign of ratio, 2 dots. So these type of numbers like ratios, these are rational number. So I can say in general, if P and Q are two numbers, integers, then the numbers of the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are rational numbers. Why Q is not equal to 0? Because if we take P upon 0, any number divided by 0 is not defined. That is why Q should not be equal to 0. So I can define rational number as a number which is of the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Are all fraction rational numbers? Yes. Why? Because जो fractions हैं वो all positive हैं. तो this is also numerator and denominator is of the form P/Q where these are only positive and Q is not equal to 0. Okay. So all fractions are rational number. Are all integers rational numbers? Yes. Why? Because integers are negative numbers, 0 and plus number. Say integer I take -3, so I can write -3 as -3/1. So P is -3 and Q is 1 which is not equal to 0. So it is a rational number. Any +3 I can write 3/1. This is a rational number. 0 by divided by any number is 0. So this is a rational number. So all integers are rational number. और हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है equivalent rational numbers. से एक rational number है 2/3. If I write 2/3 as ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ नीचे भी तो I get 6/9. So these two numbers 2/3 and 6/9 are equivalent rational numbers. Or if I multiply 2/3 by 4 I get 8/12.
So this is also an equivalent rational number. 2 by 3, 6 by 9 and 8 by 12. All these three are equivalent rational numbers. It's not only the multiplication, we can divide also. Say if I have 8 by 12 and I divide by 4, I get 2 by 3. So 8 by 12 and 2 by 3 are equivalent rational numbers. You know, division is the reverse of multiplication, no? That is why. और हमने पढ़ रखा है what is standard form of the rational number. Standard form है कि जैसे 2 by 3 है. When this cannot be reduced further, that means if numerator and denominator have only one as a common factor, no other common factor is there. So this is of the form P by Q, where P and Q have only one as a common factor, no other common factors are there. Acha, if I say is 45 by 60 the standard form? No, because these are not the lowest terms. Like I can divide this by 15, this by 15, both sides I will divide by 15. What I will get is 3 by 4. This is the lowest term. This is the standard form of the rational number. और हमने क्या पढ़ रखा? Comparison. Comparison means say 2 by 3 and 5 by 7. Compare these two. Means which one is greater and which one is smaller. उससे पहले हम एक और देखते हैं 2 by 3 and 15 by 3. इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है? इसमें अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो 2 is less than 15. So 2 by 3 is less than 15 by 3. अब इस केस में डिनोमिनेटर इज डिफरेंट. तो हमारा फर्स्ट काम क्या होगा कि वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. हाउ? बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड एलसीएम इज 21. ठीक है. So this number becomes what? 3 is multiplied by 7. So I have to multiply 2 also by 7. Right? This is this number. So this is 14 by 21. What is this number? 5 by 7. This is 21. 7 is multiplied 3. So I have to multiply 5 by 3. That means 15. So this number is 14 and this number 15. 21 is denominator is same. So 14 is less than 15. That means this number is less than this. That is 2 by 3 is less than 5 by 7. Next is addition or subtraction. So suppose we are to add this. Same method, whether we are to compare, add or subtract, what we will do is we will make the denominator same by taking LCM. So this is LCM is 21. So how I got 21? By multiplying 3 by 7. So I will multiply numerator 2 also by 7. 2 into 7, right? Plus as it is. Now how I got 21 for this? 7 multiplied by 3 gives 21. That means I am to multiply 5 by 3. Right? So this is 2 into 7, 14. Plus 5 into 3, 15 upon 21. So this is 29 by 21 is the answer. If I am to subtract 2 by 3 minus 5 by 7, same method, take LCM. So 3 7s are 21, 7 into 2 14, minus sign as it is, 7 3s are 3 into 5 15, when there is no sign means plus. So this is plus 14 minus 15 means we have to add these two different sign. We will subtract from the bigger number the lower number 1 and sign of the bigger number. So this is minus 1 upon 21. This is the answer. And we have learnt multiplication and division also. Say I am to multiply 2 by 3 into 5 by 7. तो इसमें क्या करना है? यू आर टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स. So this is 2 into 5 is 10, 3 into 7 is 21. Suppose I am to divide 2 by 3 by 5 by 7.
उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं. वन इज़ एडिटिव आइडेंटिटी. उसमें क्या है, जैसे कि 2/3 है. What is to be added to 2/3 so that I get 0? If I add to this minus 2/3, this gives me 0. So this is called minus 2/3 is additive inverse of 2/3. And if I write what should be added to this number so that I get 0, of course 2/3 is to be added. Then I say this is the additive inverse of this. Next is multiplicative inverse. उसमें क्या है, what I should multiply this number so that I get 1. If I multiply 2/3 by 3/2, 2 gets cancelled out, 3 gets cancelled out, answer is 1. So this is multiplicative inverse of this. 3/2 is multiplicative inverse or reciprocal, we call it, of 2/3, right? Here we will use reciprocal. So 2/3 divided by 5/7 is 2/3 into the reciprocal of this, and reciprocal of 5/7, 2/3 का 3/2. You have to interchange the denominator and numerator. So 7 here is the denominator, that will come to numerator's place, and 5 will come to the denominator place. Okay, now 2 into 7 is 14, 3 into 5 is 15. This is the answer. अच्छा, कंपैरिजन में एक और मुझे बताना था कि अगर आता है कंपेयर 2/3 एंड 5/7, 1 माइनस. अच्छा, उससे पहले अगर हमने नंबर लाइन पे हम ये सारा नंबर सिस्टम ये अपना देखें तो से 0 यहाँ होता है. पॉइंट्स आप इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क कर लो पॉइंट्स. दिस इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी हो जाता. ठीक है, and here also same equal distance and so on. अब क्या होता है, the number which is to the right is greater and number which is to the left is smaller. Say 1 is less than 2, number 2 is greater than 1. Why? Because 2 is to the right of 1. 0 is less than 3. Why? Because 0 is to the left of 3. Minus 3 is less than 0. Why? Because minus 3 is to the left of 0. Same with rational numbers. Here all the negative numbers are to the left, all the positive numbers to the right. So if I am to compare a negative number with a positive number, so negative number is less than the positive number. So now here 1 is negative number, 1 is positive. So negative number is always less than the positive number. There is no need to finding the LCM and then solving it. No, simply write the negative number is less than the other number.